हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिरला AMC के MD एंड CEO बाला। गुड मॉर्निंग, ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। आप आ रहे हैं और एक हफ्ते पहले जो SIP डेटा आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, एकदम ऑल टाइम हाई के इससे 10 करोड़ नीचे, जो कि ये दिखा रहा है कि उतार चढ़ाव के बावजूद भी इस बार रिटेल इन्वेस्टर, जिसकी कई बार हम शायद हम समझते नहीं हैं और हंसी उड़ाते हैं कि बाजार गिरेगा, रिटेल इन्वेस्टर डर के चला जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर डटा हुआ है और SIP में बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद भी कोई कमी नहीं आ रही है। Yeah, I think morning Ajay. I think जो बोल रहा है, I think something is the reflection of the confidence जो मार्केट में कॉन्फिडेंस के अलावा इन्वेस्टमेंट्स में जो कॉन्फिडेंस आया है एक्चुअली लास्ट 4-5 साल से मार्केट को वॉलेटिलिटी देखने के बाद जो जरूरी रहते हैं एक्चुअली टू इन्वेस्ट इन फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, दैट रियलाइजेशन दैट हैज कम फॉर इन्वेस्टर्स मेरे हिसाब से हर साल वो बढ़ते जा रहे हैं। SIP way of investing is now becoming the way of building the portfolios. जो नंबर मंथ ऑन मंथ नंबर देख रहे हैं एक्चुअली SIP का नंबर is actually a true reflection of greater understanding जो इन्वेस्टर्स के लिए जो आया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एजुकेट करके इन्वेस्टर्स को मार्केट में जुड़ाने के लिए, उनका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो मदद कर रहे हैं एक्चुअली वो, एंड म्यूचुअल फंड सही के हिसाब से हर म्यूचुअल फंड आज के दिन पे सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज दी SIP वे ऑफ इन्वेस्टिंग के मंत्रा पे जो सबको एक्चुअली जो सिखा रहे हैं एक्चुअली, दैट सीम्स टू बी गेनिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंथ एक्चुअली। जो मार्केट वॉलेटिलिटी पहले के जमाने में मैं भी देखा एक्चुअली, मार्केट वॉलेटिलिटी समय में जो इन्वेस्टर्स का निकालने का कोशिश जो करते थे पहले, दैट इज नाउ एक्चुअली गेटिंग रिवर्स एंड द कॉन्ट्री एक्चुअली पीपल आर पुटिंग more and more confidence on this for putting money in SIP. I think what you're saying is right. It's nothing but endorsement of the confidence of investing in equity from long-term wealth creation point of view. Despite market का जो volatility है, despite मैं होने के बाद भी जो confidence आ रहा है, that is a reflection of that. बाला, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप ईटी नाउ स्वदेश को समय दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अच्छा, अभी आप ये भी बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस है और मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ डिस्काउंट भी हो रही है। अभी क्या डिस्काउंट होना बाकी रह गया बाला, या फिर बहुत अच्छे से जो चीज़ डिस्काउंट हो गई है वो क्या है? वो क्या क्रूड है जो बहुत अच्छे से डिस्काउंट हो गया, या फिर ग्लोबल मार्केट से जो भी डिस्काउंट होना बाकी है? मार्केट का वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स तो थोड़ा तो रहेंगे एक्चुअली, क्योंकि अभी भी आप मैक्रो फैक्टर में देखते हैं इन्फ्लेशन टू कम अंडर कंट्रोल, अभी भी थोड़ा डाउट है एक्चुअली। सेकंड इज द ऑन द बैक ऑफ इन्फ्लेशन का पीछे जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो उम्मीद चल रहा है, डेफिनेटली द हाइक इन द मार्केट एक्सपेक्टेशन इज फार हायर देन पॉलिसी मेकर्स हाइकिंग रेट्स। उसमें मार्केट का एटलीस्ट डिस्काउंट किया हुआ एक्चुअली, स्पेशली लुक एट द बॉन्ड मार्केट यील्ड definitely discounts substantial rate hike, whereas the central banks globally are not going at the same speed. So उसमें एक actually थोड़ा से disconnect है. Therefore, I would say is already discounted. I think what is still not and also what is discounted is actually is the relatively poor earnings growth that now being predicted. Also now factoring is getting factored in. I think ये साल का आप अगर देखते हैं actually 2023 का earning expectations has come to almost close to about 12.5 to 14% rate of growth, which is nothing, which is basically taking into account the potential risk arising on account of inflation, arising on account of interest rates going up, the cost of input cost is going up. All this is already factored in. I think what still to be seen in मेरे हिसाब से the monsoon का impact अभी तक मेरे हिसाब से मार्केट में bullish का तरफ से अभी तक डिस्काउंट नहीं किया है। Second is the consumption-led growth that could come in India, क्योंकि मानसून के impact will be largely reflecting on the rural economy, and rural economy का अगर consumption थोड़ा सी pick-up होना शुरू हो गया है, the consumption-led growth I think could come. Third, I think मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट में थोड़ा डाउट अभी भी चल रहा है actually, the credit growth the banking industries में आज के दिन पे जो दिखा रहा है actually, especially the leading banks, उनका credit growth especially towards personal financing, consumer-led growth, housing-led growth, उसमें जो पिकअप दिख रहा है एक्चुअली, पीपल का अभी भी कॉन्फिडेंस अभी तक उतना बड़ा नहीं है। फोर्थ ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट में ज्यादा उम्मीद नहीं आया एक्चुअली,
the chip shortage की वजह से जो automobile industries में इतना waiting period आ गया था, now the supply started coming in. Clearly, to what extent वो chips supply आने के बाद supply भी car का supply और passenger vehicle supply आने के बाद कितना आपको inventory versus the sales कितना हो सकता है, उसमें भी मेरे हिसाब से थोड़ा doubt चल रहा है actually. But I think if all in and put together, I think some of the worst are getting factored in, and market is still not factoring a sharp correction that could come in commodity prices, especially oil prices, in case there is a settlement that happens in the global economy, especially between the countries like Ukraine, where if there is a bit of meltdown happens, then naturally oil prices could come crashing. And मेरे हिसाब से market में अभी भी discount नहीं चल रहा है अभी भी. बिल्कुल, तो मार्केट पे क्या फैक्टर इन हो चुका है और अभी भी किस बात का असर होना बाकी है, इसके बारे में भी बाला बात कर रहे थे। मिस्टर बाला, फिर आपसे ये समझना चाहेंगे कि फिर ऐसे माहौल में कौन से सेक्टर पर, कौन सी थीम पर इस वक्त फोकस करना चाहिए? I think clearly if you look at last 2-3 साल का परफॉर्मेंस के पीछे और हिसाब से जो बैलेंस शीट बढ़िया होते जा रहे हैं, especially in the banking sectors, capital adequacy is a lot better, credit growth is coming back, interest rates बढ़ने से उनका margin बढ़ते हैं. Generally the banking sectors have not done very well last 2 years. I think मेरे हिसाब से banking sectors का I think उम्मीद ज़्यादा है. Actually I think sector is a true reflection of the macroeconomy and also true reflection of the broad as a proxy of the Indian economy itself. So मेरे हिसाब से banking is the one I think will come back, which has got almost 30% weight in the index. Second is जो हिसाब से government का spending which continues, मेरे हिसाब से road, railways, airports, rural economic, rural road development, इसमें जो ताकत के हिसाब से जो government को continue to spend to get the government led growth, उसमें भी capital sectors में भी उम्मीद ज़्यादा है actually. And third, of course, the consumer durable companies last 2-3 साल से for a variety of reasons, one because of pandemic, second spending generally habits were low and saving rates were high, and third, of course, input cost also is hurting some of the consumer driven companies. जिस हिसाब से rural electrification को जो बढ़ा actually in the last 2-3 साल से, clearly the power sector reform that has happened clearly done wonders in terms of reaching power to every household in the country. Whereas I say consumption-led growth also would come. I think consumer durables, as the festival season begin post-monsoon, I'm quite bullish on the second half of this year, even on the consumer durable companies also do very well. And last but not the least, I think construction activities continues to remain very, very robust. Therefore, related sectors to the construction sectors, such as some cement, such as real estate, I think should continue to do well. बाला, ये क्या कहना अब उचित होगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक बॉटम बन चुका है? क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा नज़र आती है? जिस हिसाब से जो सबसे बड़ी चिंता थी बाजार के माइंड पे वो थी इन्फ्लेशन, सारे इन्फ्लेशन के कंट्रीब्यूटर्स तो नीचे आ गए, या ये कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा? बाजार कब ये बात फैक्टर इन करना शुरू करेगा? क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब का भी एक कमेंट आया था कि अक्टूबर से इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए. I think बाजार का I think we'll look at it from two angles. एक तरफ से volatility in the market जो पहले एकदम ज़्यादा से आ रहे थे actually, that volatility मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम होते जाएंगे. Second is the market will start discounting some of the companies that will come in the first quarter. I think current quarter, the way TCS given a guidance yesterday, I think all such guidance will come. As the more and more results starts coming in the next, say, 15 days, as the guidance starts coming in, the market but discount one ke baad, we can probably make an assumption that market will actually see a bottoming out. At the same time, as the outlook starts getting better, moving into towards the second half of this year or third quarter of the current financial year, and the outlook starts getting better, is something which will also happen. And then the fourth, of course, the moment you see the interest rate hike is not going to be as high as what is in the past. Will probably stability of interest rates. Cost of capital now will not go up significantly. Therefore, it's not going to hurt companies from investment point of view. Then probably the equity investment will come back. I think it'll all depend upon the flows coming from overseas will actually be the driver. My own personal belief is this year, second half this year, we will probably the FAs coming back to India and among the emerging market allocations, therefore creating some kind of positive
pull up in the market. ठीक है बाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छे से आपसे बात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया।